साथ डिस्कस कर रहा था ई कॉमर्स स्टोर में। तो ई कॉमर्स स्टोर के अलावा जो है उसके अंदर ही आपकी एक और ड्रॉप शिपिंग वाली सर्विस होती है। ड्रॉप शिपिंग वाली सर्विस में ये होता है कि आप किसी की प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे होते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। यू कैन मेक मनी एंड इट इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर यू कि आप ड्रॉप शिपिंग अलीबाबा अमेजोन है, ये जो कंपनी है ये दूसरों की प्रोडक्ट्स लेती हैं और इनको ड्रॉप शिपिंग के थ्रू आपको सेल करते हैं। अली एक्सप्रेस भी है, किसी कोई भी चीज़ अपनी वेबसाइट पर भेजते हैं। इफ़ यू आर एंटरप्रेन्योर, वर्डप्रेस इज द राइट चॉइस फॉर यू। ठीक है, स्टार्टअप इज अ न्यू कंपनी, स्टार्टअप अ न्यू वे ऑफ डूइंग बिजनेस। आप अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि स्टार्टअप करने के लिए आप बहुत ज़्यादा जो है पैसे खर्च करना नहीं करना चाहते, दैट वी विल रिकमेंड यू दैट स्टार्टअप वर्डप्रेस। वर्डप्रेस इज फॉर फ्रीलांसर्स। फ्रीलांसर्स लव वर्डप्रेस बिकॉज इसके अलावा आपके पास सर्विसेज वेबसाइट बनाना चाहते हैं, उसमें जो है देन वर्डप्रेस इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू। स्मार्ट वर्कर बहुत है कि वो इज 8 to 4 डूइंग जॉब लाइक इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, और वो स्मार्ट ऑनलाइन टूल्स यूज़ कर रहा है, जैसे कि फेसबुक यूज़ कर रहा है, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है, लिंक्डइन यूज़ कर रहा है, ट्विटर यूज़ कर रहा है, यूट्यूब यूज़ कर रहा है। तो वो अपनी इस स्मार्ट यूनिट को इसलिए यूज़ कर रहा है कि वो इसकी जो है अपनी अर्निंग को बढ़ा सके। तो ये भी आपके लिए एक अच्छी चॉइस है। शेयर कंटेंट, यू कैन यूज एंड प्रेस टू शेयर कंटेंट। If you are making website where you share content or your advice to the world, knowledge or intellectual sharing, someone you was sharing, someone use Twitter or Facebook. So regardless, instead you should choose WordPress and not use Facebook or Twitter, because it has own policies and rules and regulations. Sometimes you are sharing your opinions which are regardless and not good for Twitter, and Twitter not like dislike, and Facebook dislike. You cannot in other words you cannot freedom opinion can share with others. Then you can use the platform of WordPress, gives you body for long time content, also and leadership. You can use WordPress for thought leadership. If a topic you want to share detail about them. University students, every day you go university and then come back, share your learnings and assignments, share on blogs, on WordPress websites. Like WordPress is the best option, best platform where you can share your by which through which you can share your content in the form of in the form of vlogs and blogs, assignments you can share also, and you can also use the opportunity you have digital CV. Digital CV can online CV, in which through which you can you will attract your employer, and you can discuss your show your portfolio of your past life in you did in university, lot of things. एक बिजनेस इन फॉर्म ऑफ कैफे यू कैन शेयर विद वर्ल्ड चैनल ऑफ वेबसाइट। मैनेज क्लाइंट्स आप कर सकते हैं, लीड जनरेशन कर सकते हैं। आपको शौक होगा कि अपने आइडियाज़ जो है लोगों तक सेंड करें, उनको शेयर करें उनके साथ। और इसके अलावा जो आप अपने आप को लोगों के सामने एक इन्फ्लुएंसर प्रमोट कर सकते हैं, उनके सामने अपनी राय रख सकते हैं, और यू कैन शेयर योर कंटेंट, मार्केटिंग अपडेट्स कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अपडेट्स कर सकते हैं। तो लॉट ऑफ आइडियाज़ अपने जो है शेयर करके जो है वो लोगों को यू कैन मेक मनी। एंड न्यूज़ पब्लिशर, यू कैन लॉन्च योर वेबसाइट इन एंड शेयर लेटेस्ट न्यूज़, इट डिपॉजिट कंटेंट इन द योर वेबसाइट। ऑनलाइन प्रोफेशनल, ऑनलाइन वर्क, टास्क मैनेजमेंट फॉर टीम मैनेजमेंट। तो ऑनलाइन प्रोफेशनल जो लोग हैं वो भी ये जो आप ऑनलाइन प्रोफेशनल बनना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। वी लर्न इन दिस लेक्चर वर्डप्रेस इज अल्टीमेट टूल। हु आर द पीपल हु शुड बी यूजिंग वर्डप्रेस। तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी ऐसा बंदा हो जो कि जिसके लिए वर्डप्रेस ना बनाओ। तो वर्डप्रेस जो है ना, ऑल द पीपल जो कैन यूज वर्डप्रेस फॉर देयर ओन पर्पसेस, एंड मुख्तलिफ प्रोफेशंस के लोग इसको एक अच्छे तरीके से अच्छे आइडिया के साथ यूज कर सकते हैं। देन आप देखते हैं वर्डप्रेस में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और किस तरह मुख्तलिफ तरीके से आप पैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए कोई एक चीज़ जरूर, ये जो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। पैशन आपके अंदर होना चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए। सेकंड, ऑब्जेक्टिव की जरूरत होती है, अटेंशन और टाइम आपका दरकार होगा कि आप इसको, यानी कि आपकी कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप इसको करेंगे तो ये आपके प्रोफेशन, आपकी ज़िंदगी को बदल देगा और आपको मनी भी देगा, और ये आपको 1000 भी दे सकता है, 10,000 भी दे सकता है। तो वर्डप्रेस इज जस्ट अ टूल, सेटिंग योर ओन ऑब्जेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना नहीं भूलना। Let's start with the 20 ways you can make money with WordPress. Affiliate marketing. Affiliate marketing is a way to sell for others, and WordPress gives you an opportunity. And if you are writing much content or much list product, when you बहुत सारी affiliate marketing website जैसे कि क्लिक बैंक है, Amazon है, link your website, you can become an affiliate marketer. Google AdSense, making money with Google AdSense, this is the most popular ways to make money with WordPress. WordPress पर ऐड लगाकर पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा ऐड लगाने से पहले याद रखें कि आपकी ऑडियंस होनी चाहिए। अगर आपके पास ऑडियंस नहीं है तो then first you make audience and build your audience. That audience people come to your website and interact with your content, and that's one of the ways that you make money with Google AdSense. Ads provides Google. Sell ads directly. If your website popular, if a traffic comes onto your website, you can become the money by selling ad directly. Pro Pakistani mango bar tech juice. When you go to your website, you will
see the display ads on their website. That's they make money because they have an audience. They can sell ads. You do this as you make website with WordPress, through which you can sell ads directly. Is building traffic. Sell a sponsored blog post. You can earn money as sell sponsored blog post. These are what native content blogs on behalf of sponsors you publish on your websites, and you charge per post. This is the another way of making money. Writing reviews, guest blogs. आप किसी और के लिए reviews लिखें, guest blog करें, then you can make money with that brand. Not only your sites, और अदर साइट्स पे भी जाके आप कर सकते हैं एज ए गेस्ट ब्लॉगर और एज अ गेस्ट रिव्यूअर्स. फ्लिपिंग वेबसाइट इज अ सेलिंग वेबसाइट्स. क्रिएट अ मेंबर ऑनलाइन कंटेंट. ये भी एक तरीका है जी. यू कैन यू आर इफ यू आर डाइट्रिशियंस यू कैन ऑफर अ डाइट एंड सेल द डाइटिंग प्लान एंड दैट यू कैन मेक मनी. एंड जॉब बोर्ड. यू कैन आल्सो मेक मनी बाय ऑफरिंग जॉब बोर्ड फॉर पेड मेंबर्स. login.pk by selling ebooks on WordPress, or you sell online courses, make money from WordPress. Webinars. What is the webinar? You can host webinar. Webinar क्या होता है कि to make money. What is the webinar? These are online seminars through which you are selling your expertise to a certain audience. Freelancing services. You know better. You know everything on the freelancing. You can offer freelancing services. Freelancers love WordPress and use of WordPress. You can offer your services of a freelancer and make a lot of money. Consulting business or consulting idea. You can start consulting business. Many consultants choose WordPress because easy to set up, to which maintain their web development cost. Coach. You can become a coach. You can teach. Become coach. If you become good coach, you can earn money. E-commerce store और business. अगर आप ऑफर करें एक प्रोडक्ट के, अगर कोई इसे बाय करे, आप इस तरह भी पैसे कमा सकते हैं. मिसाल के तौर पे आप एक ऑनलाइन टी शर्ट स्टोर बना सकते हैं. यू कैन क्रिएट एन ऑनलाइन टी शर्ट स्टोर एंड यू कैन मेक मनी. ड्रॉप शिपिंग ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि यू कैन क्रिएट ड्रॉप शिपिंग सर्विस इफ यू आर सेलिंग अदर प्रोडक्ट्स. Amazon affiliate shop. You can create Amazon affiliate shop which is similar to affiliate marketing. या आप प्लगइन बना सकते हैं, या आप थीम बना सकते हैं. आप कितने, आपके लिए सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप 1,000 भी कमा सकते हैं, आप 10,000 भी कमा सकते हैं, आप 1 लाख भी कमा सकते हैं, आप 5 लाख भी कमा सकते हैं, 10 लाख भी कमा सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन योर पैशन and your hard working, your motivation and your concentration as well as your attention. तो ये आपकी कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करता है. से तवक्को है कि आप अपनी जिंदगी बदलें और दूसरों की जिंदगी पर बदलें जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, और अपने मुल्क का नाम रोशन करें. अल्लाह हाफिज.